Welcome back to Chasing the Target. A very good day for Australia. Day one for Australia. Day one for India women as well. जबरदस्त शुरुआत करे women's department India की 400 on the first day. Spectacular from Harmanpreet and the other rest of the team. The middle order in particular debutant Satish Shubha. उसके बाद आपका जमामा रॉड्रिग्स ग्रेट इन लोग की जो पार्टनरशिप थी, फिर हरमनप्रीत कौर यास्तिका भाटिया की जो पार्टनरशिप थी, फिर उसके बाद दीप्ति शर्मा, तो काफ़ी बैटिंग डेप्थ देखने को मिली आपको इंडिया के वुमेन्स के स्क्वाड में. आई थिंक इट फैंटास्टिक स्टार्ट टू द डे वन फॉर इंडिया. I'm pretty sure the bowling will want to be getting maximum number of wickets and putting pressure on England. But जिस तरीके से lead करी हरमनप्रीत from the front, I think it was a fantastic toss to win and also a decision to bat first. If you're looking at the positives, yes, India काफ़ी टाइम के बाद घर पे खेल रही, but yes, कंडीशंस काफ़ी एक्लेमेटाइज है इंडिया यहाँ पे. बहुत अच्छी तरीके से खेली है वुमेन्स टीम आज. जिस तरीके से 410 रन एक ही डे में मारना, इट्स अ फैंटास्टिक जॉब डन बाय द गर्ल्स. एंड आई थिंक दे गोना ट्राई एंड पुट सम प्रेशर ऑन इंग्लैंड विद द बॉल. एंड अगर इंग्लैंड क्रैश होती है तो विल दे गिव सेकंड इनिंग्स टू इंग्लैंड, वो देखना बाकी है अभी. बट अभी भी टेल खत्म नहीं हुई अभी भी. आई थिंक देयर 410 फॉर 7 एट द एंड ऑफ डे वन. अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर देम. पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस डेविड वार्नर बोलना चाहिए. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डेविड वार्नर आज पूरे पूरे मैच में 164. व्हाट एन इनिंग फ्रॉम डेविड वार्नर. अगेन आई मीन जिस तरीके से हम लोग सोचे थे वही शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की. अगेन टॉस जीत के बैटिंग करी उन्होंने, विच वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक गिवन द कंडीशंस ऑफ पर्थ एंड स्टफ. बट आई थिंक दे न्यू द विकेट बेटर देन एनीबॉडी एल्स. डेविड वार्नर स्टार्टिंग ऑफ विद ब्रिलियंट स्ट्रोक प्ले. कवर्स में उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करे थे. पुराने प्लेयर्स भी काफ़ी क्रिटिसाइज करे थे. एंड उसका जो सीजन रहा है इन टेस्ट क्रिकेट, इफ यू लुक एट द साउथ अफ्रीका सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में थी, इट वाज स्टिल डिसेंट कि वहाँ पे उन्होंने 200 रन मारा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एट होम. बट एशल में उतना नहीं चल पाए. स्टार्ट्स मिल रहे थे उनको, बट ही वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज. आईपीएल उनका उतना अच्छा नहीं था. वर्ल्ड कप में दो तीन पारी अच्छे खेले थे. आप देख सकते थे कि पुराने डेविड वार्नर की साइंस दिख रहे हैं. आज आप देखिए 164 रन. आई थिंक अ फैंटास्टिक fantastic performance from David Warner. He got 4 sixes and 16 boundaries. Again हम यही बात करें कि भाई पाकिस्तान bowling attack is not as threatening as it's claimed to be. सबसे बड़ी सवाल शाहीन पे होती है भाई. अभी भी 140 consistently नहीं डाल पा रहे. I know एक आध went edge एक आध edge over the slip quadrant गया, मुश्किल थी उनके लिए. But I still don't feel that this Pakistan team is fierce bowling now that we were seeing a couple of months ago Asia Cup में या श्रीलंका के अगेंस्ट. आप रन डाउन कर दिए पूरे अपने बॉलर्स को. आप पूरे थके हुए हैं. पूरों में अभी भी इंजरीज लिंगरिंग दिख रही हैं. आप देख सकते हो कि थकान है. दे जस्ट नीड अ ब्रेक राइट नाउ. एंड आई थिंक हारिस ले लो, आप नसीम ले लो, शाहीन ले लो, वो पेस की ज़रूरत है आपको जो पुराना पेस था. यस, खुरम शहजाद रिसेंटली डाला, ही डिडंट डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ही उल्टा उनका एक चांस भी ड्रॉप हो गया था. बट अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट 133 132 ऑन दिस पिचेस विल प्रॉब्ली नॉट गेट यू अ लॉट. आप 130 132 135 अगर डालेंगे, आपको क्या एक्सट्रैक्शन मिलेगा, आपको क्या बाउंस मिलेगा. आप एंड अगेन line actually अगर आप देखो throughout the day fuller length was actually giving more purchase. There were a little bit of offer. आगा सलमान मेरे को लगा काफ़ी अच्छा डाले. आगा सलमान पूरा पिच अप करके जब डाल रहे थे तो उनको टर्न मिल रहा था. सरफराज अहमद एक स्टंपिंग भी मिस करे उनकी बॉलिंग पे. दैट वाज अ लिटिल बिट हार्श ऑन आगा सलमान. किस तरीके से वो बॉलिंग करे थे, आई थिंक ही डिजर्व्ड अ विकेट. बाबर वहाँ पे रन आउट करने की कोशिश करे, फिर एक्स्ट्रा रन चले गया. इट वाज chaotic over there from इन आगा सलमान ओवर, जहाँ पे they missed the stumping I think of David Warner himself. जो आई थिंक 140 150 पे खेल रहे थे. जब डैमेज तो हो गया था डेविड वार्नर की तरफ से. 134 165 6 जो भी बोलता है. आई थिंक 164 वाज obnoxious नॉक बोल सकते हैं आप. डे वन पे 364 रन इज अ लॉट ऑफ रन टू गेट. एंड 346 सॉरी 346 रन एक दिन में. इट्स फैंटास्टिक बिट ऑफ क्रिकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड डोमिनेटिंग पोजीशन में है अभी ऑस्ट्रेलिया. अगर आप देख लो माइंड सेट वाइज पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे ऑलरेडी दिख रही है. थोड़ी बहुत सेमी भी है आफ्टर दैट नॉक फ्रॉम डेविड वार्नर. फिर ट्रैविस हेड आके जो एक्सेलरेट करे, आई थिंक ट्रैविस हेड वाज फैंटास्टिक एज वेल. द क्विक 40 दैट ही गॉट, ही हिट 6 बाउंड्रीज इन दैट. स्टीव स्मिथ थोड़ा बहुत रिदम में दिख रहे थे, बट अगेन एजिंग इट टू सरफराज अहमद. उस्मान ख्वाजा
Raja and David Warner started off brilliantly. Acha partnership carry on करे all the way till 126. There was no wicket, no signs of a wicket, but Shaheen came off with a good delivery. अच्छा थोड़ा बहुत पिचअप करे एंड एच लग के उनको कॉट भी एंड हो गया था. आई थिंक फ़हीम अशरफ का जो डिलीवरी मार्नस को था थोड़ा इन हट गया था. बट ओवरऑल अगेन आप देखिए कि दिस काइंड ऑफ कंडीशंस रिक्वायर 145 150 बॉलर्स. एंड आप देख लिए व्हेन स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस कम आउट, तीन वैरायटी के बॉलर्स हैं वहाँ पे आपके पास. हेजलवुड कैन गेट यू टू मूव द बॉल, seam up positioning with Mitchell Stark, and then Pat Cummins अपने cutters या अपने he can bounce the ball pretty well. So that gives variety to the of the Australian bowling lineup. But आप जब पाकिस्तान की लाइनअप देखो, आप कुछ कुछ डर नहीं हो रहा, कुछ एग्रेसिव नेचर नहीं दिख रहा, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे. अगेन वही आ रहे हैं, बॉल पटक रहे हैं, खत्म, अपना काम कर दे रहे, ओवर खत्म कर दे रहे, टोपी लेके वापस फील्डिंग पे चल जाओ. देयर इज नथिंग काइंड ऑफ कि भाई आप एक विकेट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी करो, थोड़ा एग्रेशन में डालो, थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करो पिच में कि भाई मेरे को कहाँ मूवमेंट आ रही है, कहाँ मेरे को थोड़ी बहुत बाउंस आ रही है. आप वो लाइन ढूंढो एटलीस्ट. आप यू हैव 90 ओवर्स टू एक्सपेरिमेंट है. आप उसमें जिधर जिधर आप बॉल डाल सकते हो. एंड आगा सलमान को ही देख लीजिए, इनिशियली उनको नहीं मिल रहा था, बट थोड़ा अगर उन्होंने पिचअप करा तो ही वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट टर्न. तो नेथन लायन प्रॉब्ली वो देख के ऑलरेडी देखे होंगे कि भाई मूवमेंट है यहाँ पे, ये पिच पे थोड़ा बहुत टर्न मिल सकता है स्पिनर्स को. क्योंकि अगर आगा सलमान जो पार्ट टाइमर है उन्होंने इतनी अच्छी डाल सकते, तो फिर नेथन लायन कितना ही अच्छा डालेंगे. So that was one thing that was shocking, that Pakistan did not look to find areas or find ways to get wickets. आओ डालो खत्म करो, आओ डालो खत्म करो. वेरी कैजुअल. और 130 135 से ज़्यादा कोई डाल नहीं रहा था. शाहीन एक आध बॉल 140 को लेके गए शायद, उसके अलावा 138 139 के ही रिदम में रहे. एंड आई थिंक नाउ इट्स द टाइम टू से मे बी दैट टैग जो बॉलर थे कि भाई मोस्ट फियर्स बॉलिंग अटैक या मोस्ट क्या बोल सकते हैं आप, डेंजरस बॉलिंग अटैक अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं दिख रही पाकिस्तान. दे लुक ऑन द बैक फुट, एंड आई थिंक राइट नाउ हेजलवुड, स्टार्क एंड Pat Cummins will be more scarier than anyone right now, who will be there bowling probably in the next couple of maybe tomorrow itself. They will be starting their bowling. I think 500 तो मार ले सकते Australia with the rate that they're at right now, 346 for 5. You have Mitchell Marsh, अच्छे बड़े-बड़े छक्के मार सकते हैं, एलेक्स कैरी तेज़ खेल सकते हैं, आपके पास पोटेंशियली कमिंस तक बैटिंग है आपके पास, सो यू कैन प्रॉब्ली बैट ऑल द वे टिल 8-9. तो दैट इज़ आल्सो अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. डे 1 आई थिंक, डे 2 में सेशन 1 तक बैटिंग करके आई थिंक बुला लेंगे पाकिस्तान को. एंड देन दैट इज़ अनदर थिंग कि भाई आप एक्लिमेटाइज़ कैसे होंगे अगर बाउंस और स्पीड बढ़ने लगी पिच पे. घास तो आपको दिख रही है, ग्रीन टॉप दिख रहा है, ग्रीन क घास दिख रही है आपको आराम से वहाँ पे पिच पे. एंड कितने विकेट जाने वाले, इमाम सस्टेन कर सकते नहीं कर सकते, अब्दुल्ला शफीक कर सकते नहीं कर सकते. अगेन इट्स जस्ट गोना बी अ लॉट ऑफ रन्स. फिर आपके ऊपर बंडल ऑफ 500 इज अ बिग टारगेट टू फर्स्ट गेट. मे बी आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि भाई ड्रॉ के लिए चले जाएं, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन ऑन डे 2. आई डोंट थिंक यू शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ. यू शुड चैलेंज अप, बी एग्रेसिव. आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट जो डेविड वार्नर खेले, इंप्रूव करे कि आप ये विकेट पे एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं. आप हिटिंग कर सकते हैं, आप छिक्के भी लगा सकते हैं, आप चौबे भी लगा सकते हैं. सो आई थिंक David Warner did prove that you have to be aggressive but also be smart with your shot selection. And I think जो शॉट वो शाहीन अफरीदी को मारे हैं, आई थिंक दैट 6 उनका टेम्पलेट शॉट हो गया है. अब वर्ल्ड कप में भी आप काफ़ी 1 2 3 बार देखिए उनको गोइंग ओवर द फाइन लेग रीजन अक्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल एंड पैडलिंग इट, बोलो आप क्या बोलो आप, it was just a fantastic six that he smashed to shine. And 164 I thought 200 मार सकते, but unfortunately he just hit one too many, gave it away in the deep. And yeah, I think abhi bhi there are a lot of runs in this match from Mitchell Marsh and Travis had to come. But मेन प्रॉब्लम अगेन है यार, बॉलिंग उतनी नहीं क्लास नहीं दिखी. बॉलिंग में कोई सॉर्ट ऑफ डरावनापना नहीं था. विकेट मिलने को मिल गया. आई थिंक फ़हीम का बॉल अच्छा था, वो लेंथ पकड़ के चलना था. अगर मूवमेंट वहाँ मिला आपको मानस के बॉल पे, या शहजाद आई थिंक जो डेब्यूटेंट थे, दे बोल्ड डिसेंटली वेल. यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम 130 पेसर. ही बोल्ड प्रीटी वेल. अच्छी जगह उनके एक आध जो कैच छूट गए थे उनके अनफॉर्चुनेटली, एंड आगा के भी एक आध स्टंपिंग मिस हो गई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच इन इट. वही आओ बॉल पटको, मे बी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा बहुत आप लाइन इन लाइन ढूंढो अपनी, कहाँ पे आपको मूवमेंट फॉर द स्पिनर्स मिल सकता है, फॉर द फास्ट बॉलर एंड टर्न फॉर द स्पिनर्स, बिकॉज यू डिड सी देयर इज अ बिट ऑफ टर्न ऑन ऑफर, देयर इज अ बिट ऑफ अ बाउंस ऑन ऑफर एज वेल. सो आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आई कैन से कि भाई यू कैन bowl out as well, but it's just there's no intensity, there's no इंटेंट ही नहीं है भाई वो टीम में. लाइक अभी ऐसा दिख रहा है कि they've already psychologically lost the game. But बैटिंग है, बैटिंग देखना है. मे बी आई एम स्पीकिंग टू अहेड, बट इमामुल हक
when you look at this pitch and you look at the bowlers that are to come, will he be able to? I don't feel so. But it's a test for Babar 100%. He can, if he's trying to play aggressive cricket, if he's trying to be on the front foot, you can probably make a lot of runs. But it's just time to see. 30-20 IB hai aaj India और South Africa का. That will start around 8:30. तो I think टॉस को लगभग 15 से 25 मिनट है. सो बारिश की आशंका नहीं है. आई थिंक 25% 30 है. रेन के चांसेस थे 25% इन जोहानिसबर्ग. लेकिन अभी भी वो क्लियर स्काइज बता रहे हैं. सो होपफुली एक पूरा मैच आपको फाइनली देखने को मिलेगा. एंड होपफुली द क्वर्ट लुइस सिस्टम इससे हारेंगे नहीं, या या जीतेंगे नहीं, वट एवर इट इज़. बट आई होप कि भाई इंडिया मैनेज. ट्रेविस हेड इज आउट. या Travis had got out to buy Amir Jamal. I saw that as well, and yeah, but again, it's just not a lot of things to do. I mean, now Alex Carey and Mitchell Marsh, they have a lot of runs in them. They can potentially get to a 50 each or a 80 each. That'll take your your total probably to 450 easily. But I'm just disappointed with the bowling that Pakistan displayed and the pace of the bowler. I thought these guys would have been faster than what was shown. 132 on these wickets, not going to get you anywhere. You need a Kagiso Rabada kind of a pace and not Khaya kind of a pace to extract some kind of a bounce, or at least try and bowl short. You didn't even see that happening a lot. Mostly it was fuller deliveries where they did get a bit of movement there as well, but not that कि भाई at least गुस्से में तो आओ, थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव रहो on the field, वो भी नहीं. It was just आओ अपना काम करो और चले जाओ. But yeah, 30-20 आई Johannesburg India versus South Africa. First वाला डर्बन में वॉश अवे, सेकंड वाला कैगबरा में साउथ अफ्रीका जबरदस्त जीती, मार्करम एंड हेंड्रिक्स. थर्ड आप अगर देखो आज जो है वाला, इट गोना बी इन जोहानिसबर्ग. बैटिंग फ्रेंडली भी है, बट ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट pace and bounce also on the pitch. For a quick bowler it'll be a good pitch to bowl on, but you can equally bat very well in this thing. काफी रन्स मारे गए हैं ये ग्राउंड पे ऑलरेडी. आई थिंक लगभग 400 कुछ रन रिपोर्ट करे गए हैं. सो yeah, it could be a run fest, and बैटिंग करने वाली टीम will definitely want to think. but अगर आपके पास पेस बॉलर अच्छे एग्जीक्यूट करे एरियाज में, so you can manage to get wickets as well. ऐसा नहीं है कि वन साइडेड अफेयर होगा. it would be a balanced thing. Maybe स्पिनर्स के लिए ज़्यादा नहीं है. जो हम सेकंड T20 में देखे थे, स्पिनर्स काफ़ी इन्वॉल्व हुए थे. But अभी कोई टीम न्यूज़ तो नहीं आई है. There's no thing, but I would personally probably want to see maybe Jadeja out, Washington Sundar in, and probably Mukesh gets a chance to come in. Let's see what happens with that. The Indian women test also was today with England. A fantastic start for them, 410. Middle order, I think. The Satish Subha, who was the debutant, fantastic performance with her and Jemima's partnership. Then Harmanpreet and Yastika Bhatia's partnership, and end में जो दीप्ति शर्मा स्नेहा राणा का चला है. Before Sneha Rana went back, fantastic performances from them. It's again going to be a long test series. Runs काफी मिल चुके हैं. But if you're just tuning in, yeah, 30-20 eyes on the card. काफी cricket था, a lot of cricket today. Pakistan Australia in the morning, and then India women's England women का test match in the मॉर्निंग एज वेल. अब शाम में आप देखो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. 30-20 है. और याद रखिए, अगर इंडिया जीत गई है तो 1-1 ड्रॉ हो जाएगा. आई थिंक ट्रॉफी शेयर हो जाएगी. अगर साउथ अफ्रीका जीती, ऑब्वियसली दे विल टेक द ट्रॉफी बैक टू देयर होम, or in their home rather than that. I think Pakistan should have played Noman Ali or Sajid in place of Yeah, you would need a proper kind of a spinner, but I think वहाँ पे batting compromise हो जाती थी. I think the batting would have been a little bit lesser, because again you don't know how the Pakistan team will react to these pitches, is what I feel. Because you've got, I think, till Sarfaraz Ahmad, you've got batting, and then Aga Salman adds additional. Fahim Ashraf is not a proper batsman. We've not seen a lot of runs from him. So that's 1, 2, 3, 4. And then if I'm adding Noman Ali, that's 5 out of your 11. That's 6 batsmen that you have. 6 batsmen, like proper batsmen, you would say would be a good thing. But I think, again, you're just the way Australia is right now, you probably need that additional batting. And again, Salman is not the best in the test form. I mean, he can stick around. He's probably not the likes of a Saud Shakil, but there's still a lot from him that you can expect, but you haven't seen much. But you will definitely need additional batting in these Australian conditions. I mean, I get up, Mitchell Stark, Hazelwood, and these guys get going, then you might wipe out very badly. Again, the pitch hasn't shown us that yet, but I'm just waiting for that. Last T20 I had Wanderers saw 433 runs scored. Yeah, oh, that's a lot of runs in a T20. I got 430 run, 433 run निकल रहे तो भाई वो तो fantastic है. A lot of expectation from the batting. Then I'm just waiting for
this to happen. Sorry, a lot of expectation on the batters today. Surya Kumar. वो interesting question है कि भाई ऋतुराज खेलेगा नहीं खेलेगा. Is he still ill? Will Shubman get another chance? Will Yashashvi have to sit? I'm clean on knowing that front. कि भाई वो news पे क्या anything, any kind of changes that we can expect from the Indian team. And yeah, I think condition wise, he was just saying. अभी बारिश के तो कोई आसार नहीं है. 25% थे. It seems to be fine. It could, should be an amazing game. बता रहे हैं तो I'm just waiting कि भाई hopefully बारिश ना हो and we enjoy fantastic full amount of game of cricket T20 format. Uh, yeah, अभी ये चीज में वही है कि भाई आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो. Probably tried getting out Jadeja because Jadeja has been playing consistently cricket since like a long time right now. Injury के आए बाद से he's been there. बॉर्डर गवास्कर ले लो आप कहीं भी जिधर भी आप देखो he's been there right now. And World Cup भी खेले. He's played IPL as well. He's played uh, Asia Cup I think as well. So he's just been there time and again. And I think now थोड़ा बहुत उनको बिठा के सुंदर को वॉशिंगटन सुंदर को चांस दे सकते हैं आप. And if you look at the the Arshdeep is not winning his own case. Uh, Arshdeep को काफी पेल रहे हैं day and night. So I think Arshdeep should also take a back seat and maybe you can just get in a Mukesh Kumar for today. दीपक चारा I don't know अगर वो वापस आ गए या नहीं आए क्योंकि फादर को मेडिकल इमरजेंसी थी जिस वजह से वो नहीं थे. And maybe ईशान किशन will come in for जितेश शर्मा. 3 days में आप कितना ही आप three T20s, man, that's the problem. I think three T20s will always be a problem where you might not be able to give everybody an equal chance. And apart from that, three, may say already one was washed out. You have two to play from, and again, how you going to divide that from a management point of view? It gets a little bit tough. Five T20Is or maybe seven T20Is will give equal opportunity. So people will probably have to understand कि भाई अगर उनको चांस नहीं मिलती है, then अफगानिस्तान में हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे. इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो जनवरी में होने वाले हैं. So that thing, I don't think batting would have been compromised that they are playing too fast, bowling around it in a way. But again, that is the thing. Ahmed Jamal and Fahim Ashraf, I mean, they're not like proven batsmen yet. For me, it's just that if I was a captain and I'm thinking I would probably need batting more in these conditions rather than bowling because you have 3-4 bowlers here. But for me, batting, agar topple ho gayi upar se, then you need someone to come and hold. And that's what Aga Salman can do with South Shakil. You've seen it on a lot of occasions. Ke bhai unho aake fort hold karte. And he managed to give South Shakil the prime objective of making the runs. Though unho bahut slow khelte, but I think that is the only way I'm looking at it. Yeah, Amit Jamal did do a decent job. I think he was good. Even Khurshid Shahzad did a fantastic job. I think उन्होंने जिस तरीके से डाले थे with that pace, he managed to Khurram Shahzad, sorry, managed to do a decent job. But Shaheen has been again below par average. Was like you would expect him to bowl a lot quicker, lot bouncier, lot probably get a lot more chances. I know एक आध edge हुआ उनके bowling पे, but it wasn't again the label or the branding that we've come across saying that they're one of the most toughest pace attack to face. Yes, injuries काफी है उनके पास, but it's just not that. It's someone more pace worthy maybe could have got into the squad. It's just what I'm thinking because you do need fast bowler who can extract bounce as well. So yeah, वो मोहम्मद इरफान को ला लेना था. दबा के 7 फुट लंबा बंदा था उसको तो भी ला लेते तो क्या क्या ही होता था. But yeah, overall 346 day one, brilliant from Australia's point of view. Now, how much do they bat tomorrow? Probably first session tak batting karke finish the batting and give it off. They'll probably go and try to hit quick runs, particularly Alex Carey and Mitch Marsh up front. काफी मारने जाएंगे जल्दी जल्दी एक 400 450 मार के बुला लेंगे and then that's when the fun begins. That's when Australia get to bowl and फिर आप देख सकते हैं कि फर्क कितना शायद हो in the way Pakistan was bowling and the way uh, ऑस्ट्रेलिया विल बोल. तो वो मालूम होने वाला है अपने को कि भाई हाउ डिफरेंट दिस टू पेस अटैक्स कैन बी. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन केएल राहुल सेइंग ही विल प्ले एज अ मिडल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन आईपीएल टू प्रिपेयर फॉर द if he said, I mean, yeah, then that's just too sad. I think because Ishan Kishan, I think, is doing a fantastic job throughout the year, and this guy just can't seem to be getting in. I don't think KL Rahul is a T20 player, and he should not like he slows up everything. I mean, I don't like KL Rahul a lot. I'm not going to say he wasn't a very good batsman in the 50-over format. Asia Cup, mein, he killed it. He killed it. Even in the World Cup, he played a match or odd. He got the odd contribution of 38-40 consistently in the World Cup. I would still say World Cup mein thode he would just compare
comparison of Asia Cup में थे, in the World Cup he seemed a little bit more mellow. But yeah, he did get 100, yeah, he got 100 against Netherlands, and he got a 95 against Australia, and then small contributions. I say in the 50-over format I would pick him, but not in the T20 scheme of things, because he slows it up in the top order. I don't know what he'll come into in the middle order. You don't need an anchor. You need Ishan Kishan or you need Jitesh Sharma. Maybe not even Jitesh Sharma, just Ishan Kishan को एक को लेके जाओ. Maybe a backup would be Jitesh, but you can't just bring in KL Rahul in the middle of this kind of thing कि भाई उन्हें इतने टाइम से T20 नहीं खेले and suddenly he's just come into the scheme of things. It gets unfair on the youngsters, and I'm pretty sure अगर ये हुआ then morale will go down, and again सवाल उठेंगे जवाब आएंगे. It'll be the same merry-go-round that we've been seeing with Indian cricket. I would personally would not want KL Rahul in that squad. You have Ishan Kishan, who's been fulfilling his duty in all the formats. He's taken his time on the bench. I think bench में भी World Cup भर उन्हें bench पे बैठे. He came out as a substitute fielder on occasions. He played, I think, the Afghanistan match as well. Uh, but he deserved it like completely. I think Ishan Kishan should deserve it, and Jitesh Sharma के लिए अच्छी outing होंगी. You can't just come in and take it because you've been injured primarily most of the year. You still managed to get into the World Cup squad and the Asia Cup squad. That's good backing from the management. Chalo, good call. But T20 scheme of things, I would pick Ishan Kishan right now. The way he's been playing, it's just he deserved one World Cup. You already stole one World Cup from him. You can't steal another World Cup. I don't know what your thoughts are, Ibrahim, but I would personally not take KL Rahul in this format of T20 because we've seen what he's done in the IPL. He slows things down, he puts a lot of pressure, he doesn't care about strike rate, and that's not what you can risk in this format. And the way the other teams are preparing right now, they have all kind of hitters. They have their T20 department, they have their one day department, and they have their test department. So, मेरे हिसाब से I think KL Rahul should sit this one out, and it would just be very unfair, यार, because ईशान किशन काफी टाइम तक बैठा हुआ है यार. He's taken his bit of time on the bench and a fantastic fielder. अभी उसमें संजू भी नहीं है. अभी तो संजू are also not. Sanju's in that ODI squad for the South Africa team. So even if Sanju would also be, if Sanju had a fantastic IPL and KL Rahul has an IPL, then who do you think should get there? Uh, that's what the questions will start rising with every kind of wicketkeeper batsman. Then कि भाई अगर इन्हें perform करा, उन्हें perform करा IPL में तो फिर क्या? And अगर ईशान perform करा, then he has to definitely be there. I don't know. Jitesh का maybe you could take him as a backup. I know KL will not be a backup. So for me, it's just Ishan and Jitesh Sharma right now. Jansen misses out. I think हाँ Marco Jansen नहीं रहेंगे ये मैच में. And I think एक और कौन थे यार जो नहीं रहने वाले थे. I forgot. Marco Jansen तो नहीं है. He gonna miss out. And I think जो last में was it who is Williams or I forgot who the other one was who misses out for this particular match. But yeah, all eyes will be on Riza Hendricks. I can't wait to see him again. Zabardast खेलते जा रहे World Cup में. He was fantastic for South Africa. At times I felt कि भाई Babuma बैठना था instead of Riza Hendricks sitting. But obviously Babuma being the captain, it'll be a thing. Yeah, I don't think Jitesh will be in the World Cup. Yeah, and then that's a good card. See, Pant also is there. So Pant, if you're gonna pick Pant, then you gotta pick Ishan. Pant's not been there. I know he's not. Koetsi, Gerald Koetsi, yeah, he's not available as well. So those two, I think, are going to prepare for the Test series as well, and all other things. But yeah, if Jitesh is not going to be, then it's still okay. But if Pant is coming back, then I think Ishan is like first choice now for you, because it's going to be unfair कि भाई कोई I know Pant ज़्यादा कुछ करा नहीं, accident हुआ था उनका, but सीधा आके उनको World Cup दे दे रहे KL Rahul and जो बंदा day in and day out filling the shoes. I think Ishan would deserve that, and it would be hard on him to miss out on the World Cup where he already had one World Cup out because of obviously KL Rahul coming in after him being injured. Asia Cup खेल के and fair enough, good chance. But T20 में not no way I'm gonna take KL Rahul. Therefore India again the big question. Ruturaj Gaikwad आने वाले हैं नहीं आने वाले. Shubman Gill, Yashasvi, will it be the same combination from India? Will Jadeja play? अच्छा अच्छी क्या बोलते हैं मैच रहने वाला है. होपफुली इट्स गोना बी रन जैसा हम एक्सपेक्ट करें कि रन तो रहने वाले हैं इसमें. एंड इट्स गोना बी नाइस इवन ग्रास पिच पे बताया गया है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पॉमी बंगवा करे हैं. अर्शदीप मार्क्ड हिज रन अप, तो मे बी अर्शदीप इज स्टिल गोना बी प्लेड एंड बैक्ड अप. अर्शदीप ने मार्किंग कर ली है, तो इज दैट an indication that he'll play, or is he just trying to practice and scare everybody? But if it is, then maybe he might just see the same team. जिस तरीके से ये इंडियन टीम की मेंटालिटी रही है रिसेंट टाइम में कि भाई लंबी रस्सी दिए हैं विद केएल राहुल, विद श्रेयस अय्यर, मे बी ये लोगों को भी लंबी रस्सी देंगे. एंड आई डोंट माइंड अगर T20 के फॉर्मेट में यंगस्टर्स को लेके आप जा रहे, मे बी एक सीनियर प्लेयर इन रोहित शर्मा और विराट कोहली माइट गो, बट एंड बुमराह ऑब्वियसली. तो
वही है कि भाई बॉलर्स कितने सीनियर में से जाएंगे और बैटर्स कितने सीनियर में जाएंगे। अभी सिर्फ ये जूनियर्स को अभी आप हवा पानी देख के आप उनका स्पॉट लेके खा लोगे। इन टर्म्स ऑफ इन जून तक मालूम होगा कि व्हाट्स गोना हैपन। Brevich just scored his first maiden first class century. Yeah, Devol Brevich is different level here. I think I really like that batsman. What I've seen in the SA T20, what I've seen him do things, he's very very talented, and I think Mumbai should give him a lot more chances. I think he's still in Mumbai if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, but yeah, I think he should be able to think. And yeah, series decider hai aaj, and I'm just waiting for the toss. क्या होने वाला है? Will India win the toss and decide to bat, or will they throw the bat to South Africa? But लॉट ऑफ क्रिकेट, जैसे मैं बोला शुरू दिन से यार, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, फिर आपका इंडिया वुमेन्स इंग्लैंड वुमेन, फिर आपका इंडिया एंड साउथ अफ्रीका 30-20 द फाइनल डिसाइडर पोटेंशियली, एंड देन यू गॉट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज आल्सो द सेकंड टी20 है। फर्स्ट टी20 जिस तरीके से वेस्ट इंडीज जीती, फैंटास्टिक फ्रॉम देम. It's just been a different West Indies post whatever trauma they've gone through in terms of not qualifying for the World Cup. Now they're hosting the World Cup T20. I think they've gained a lot of confidence from players like Puran, Myers, Kyron Pollard come into the squad for T20s at least, and then you've got Brandon King, you've got so many other good kind of players. Shea Hope, I think, is a fantastic captain in the one day scheme of things. Alec Athanaze बहुत जबरदस्त player है. Hetmeyer, Romario Shepherd, तो ये लोग जो हैं, I think they're fantastic in ODI scheme. But T20 में West Indies is always challenging, and I think they've done a fantastic job. I guess in England squad is still down and out since the World Cup. देख सकते हैं कि भाई they're not in the best of touches. They're not in the best of form. England really need to pick themselves up, and maybe George Butler might see the door out after this series. If they don't win it or pull things back, maybe he might just lose a format or something. ODI में भी हार गए and अब T20 भी हारे, so it's a bit of a big question mark with George Butler in his form. But we'll come to know कि भाई क्या ही होने वाला है आगे. From India versus South Africa, still waiting on a couple of team news, तो I think एक 10 मिनट में आएंगी. बट या जैसे मैं बोला, आज क्रिकेट ही क्रिकेट है. ऐसे ऐसे साउथ अफ्रीका ए एंड इंडिया ए का भी मैच ड्रॉ हो गया था. इब्राहिम भाई कॉल दैट आउट लाउड एंड क्लियर. वाली एंड व्हाट्स हिज नेम, डॉन, ने क्या था इसका नाम, डीन ट्वान, हाँ, प्लेसिस, जो भी जो आई वाज व्हाट वाज हिज नेम, सो yeah, John Duplessis, yeah, him and Wali helped up the Yasin Wali helped up the fort and took them to a draw. And yeah, South Africa won the toss and decided to bowl first. It's a big shout. Maybe they want to chase because it's kind of a run thing. So South Africa do decide to think they won the toss, and so that if inserted India to bat, chasing is the way to go. Aiden Markram बोल रहे कि भाई नांडे बर्गर है मैच में. He's going to be doing his debut. It's going to be fun to see him. Keshav comes in too as well. So Marco Jansen and Gerald Coetzee replacement will be who prepare for the test. So it's going to be Keshav Maharaj and Nande Burger who comes into the squad. It's going to be good competition to see. And from India, I'm just waiting for India के team news क्या है. अगर आगे हैं तो you can pass it on here. But yeah, South Africa winning the toss, choosing to bowl, going to chase, going to be fun to watch how Markram Hendricks and these guys are going to come in under the when they come out to chase. It's going to be fun to see that. A lot of pressure on Arshdeep, a lot of pressure on the bowling department of India, particularly because spinner also, I don't know how much they're going to be having a say. ये वाले pitch पे, it's mostly going to be for a quick and the fast. For India, I think batting wise, they just need to save their wicket, savor their wicket, put a price on the wicket, not go out bonkers. I mean, they do want to play aggressive cricket, but there's something also of being balanced. You don't need to unnecessarily come out and just hit randomly. So I'm waiting for thing. Someone's reflection in the mirror. Who's reflection in the mirror? I think it's my reflection in the mirror. Uh, Ferreira is in for stubs as well. So Donovan Ferreira gets his opportunity as well. Fantastic player, Haro. We've seen him in the SAT20 as well. He did a lot of, makes a lot of crucial runs. He can bowl as well. So I think SAT, a lot of talent coming in from South Africa. Surya Kumar says he would have batted first anyway. No changes for India. I think same चीज Rohit Sharma, trying to make Hardik Pandya बोलते, just trying to make confidence and yeah, I don't know what it is. I don't know what you're looking at, कार्तिक भाई. मेरा शायद मैं इधर चले आ रहा हूँ तो मिरर में आ जा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि गोस्ट है, बट नहीं, कोई गोस्ट नहीं है भाई. टेंशन मत ले आप. गोस्ट है भी तो अपन संभाल लेंगे, उसमें मसला नहीं है. गोस्ट भी क्रिकेट देखने आया है तो इट्स आई थिंक इंडियन कैप्टन सूर्या द वर्स्ट लक विद द टॉस बोल रहे हैं. एंड
Yeah, I think the playing 11 is also out. So quickly, just running through the playing 11. Remember, South Africa chose to field. They won the toss and decided to field first. That means India is batting. South Africa, yeah, Riza Hendricks, Matthew Bridge, Aiden Markram, Henrik Klaassen, David Miller, Donovan Ferreira, Fehluk Vayo, Keshav Maharaj, that's the change in. Nande Berger, that's the change in. Lizard Williams, Tabrez Shamli. So Donovan Ferreira, Keshav Maharaj, and Nande Berger are in. Stubbs, Jansen, and Gerald Coetzee are out. India के लिए जयसवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, रिंकू, जितेश, Kuldeep, Suraj, Arshdeep, and Mukesh is in the squad. So yeah, I think it's pretty much the same team that we saw last time around. No Ravi Bishnoi, no number one bowler yet. A little bit of shock. Okay, bhai, what is happening with the thing? And Arshdeep, after giving away 40 odd runs or 24 runs in like 2 overs, he's still in there. I mean, ठीक है, आप बैटिंग करना चाह रहे हैं, I respect that, not a bad shout. But it's going to be fun to see. No Ravi Bishnoi, definitely disappointing Karthik Bhai. I was expecting him to come in and I just अब क्या है कि अब रविंद्र जडेजा कैसा बैटिंग करने वाले हैं, आज ऑल आइज विल बी ऑन हिम. नो वॉशिंगटन सुंदर एज वेल एज अ रिप्लेसमेंट who will like for like exactly not exactly maybe but different bowling techniques, but I think for example batting wise all rounder wise he could have gotten in. Arshdeep comes in again and again. Let's see, I mean back कर रहा है बच्चा है, so Ruturaj again maybe he's still not well recovered from the illness. ईशान किशन शुड हैव प्लेड फॉर मी एज वेल. आई थिंक ईशान किशन काफी टाइम तक बैठे हुए हैं, but maybe they're just going to give backing to these youngsters, give them an outing, give them some experience so that nobody complains. Maybe T20 ke World Cup ke around, maybe you might see a lot of these people dropped. So that'll also be a big question mark. But yeah, as of now, it's the same teams. Only changes are Donovan Ferreira, Maharaj, and Berger for South Africa. Nothing for India as of this point. India won the toss. Sorry, South Africa won the toss, decided to bowl first, and will be back I think after the game immediately. There's also England versus West Indies at 11 o'clock today in the night. To be honest, I would go with Kuldeep and T. Yeah, 100%, man. With Kuldeep, bhai, you can go with anywhere, man. Even Test, one day is fantastic bowlers, and he can bat a bit as well. We saw that in the World Cup. He could bat a bit. I'm not saying he's 100% good batsman, but he can bat a bit. T20 World Cup, we tried leg spinner with left arm off spinner, but it didn't work. Yeah, we did. You spot on, Karthik Bhai, and I think they probably again. I'm just looking at this as an experiment from like Dravid and guys just trying to give these boys an outing. Back in the night, this तरीके से आप KL and Shreyas को दिया, so maybe it will be something like that. They're just going to back them. But when Virat Kohli, when Rohit Sharma, Bumrah, these guys come back, what is going to be the context of this T20 squad? Hardik Pandya, when he comes back, what is going to be the context of this T20 squad? तो बहुत ज़्यादा सवाल उठने वाले हैं फिर IPL जब आएगा. So Abhi, I don't think this team is going to be anywhere near the World Cup team. It's still far fetched. Your senior players are missing. So just trying to give an outing. थोड़ा back कर दे रहे भाई आप जाके खेल के देखो कि भाई साउथ अफ्रीका में मैच खेल सकते हैं. तो वही है. But we'll be back with the review of this game and hopefully the start of the West Indies in England game. Australia, Pakistan. Yeah, Pakistan really need to pull their socks up. Make sure that they bat accordingly. For India, women a brilliant start, 410 on the first day. Now we move to India, South Africa T20. The last one, it could be a draw of the series, or it could be South Africa winning it at home. And then we've got West Indies versus England second T20. So lots of cricket still. Join us for the review. Thank you so much and stay tuned.